Hello everyone, my name is Dr. Sonar Rajpal. Students, today I am going to explain what is chemical bond, why the chemical bond is formed in nature and what are its various types. You know student, what is chemical bond? Chemical bond, you can say bond is just like a relationship, students. And in chemical bond, there is a kind of attractive force which holds the various constituents like atoms, ions, molecules together in different chemical species. That is called as chemical bond. बेटा केमिकल बॉन्ड इज़ लाइक अ फ्रेंडशिप. जैसे स्टूडेंट्स आपकी दोस्ती होती है, आप दोस्त क्यों बनते हो? बिकॉज दोस्त में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना. तो वो एक बॉन्ड होता है. ऐसे ही केमिकल बॉन्ड भी एक bond होता है. there is a kind of force of attraction between the constituent atoms, ions or molecules which can tie these particles in different chemical species. It is called as chemical bond. For example, in O2 molecules, oxygen atoms combine to form O2 molecules. Like water, in waters, you know students, two hydrogen, they can combine with one oxygen atom to form water molecules. Now student, question come to your mind, why the chemical bond is formed in nature or everywhere? You know student, whenever there is a kind of bond formation takes place, that can lead to the stability, because every system tends to be stable when bond is formed in nature of its own in a chemical reaction. Because whenever the bond is formed in a chemical reaction, student, energy is released. And student, when the energy of the system is released, means the stability is more. Why? Because student, there is a concept in chemistry, minimum energy of the system and maximum stability. Students, हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हैं, whenever you have a fever, है ना, whenever your temperature is very high, do you feel stable? No. Because जब आपका एनर्जी बहुत हाई होता है, there are so many reactions taking place, you feel unstable, because high energy, less is the stability. So students, in chemical reaction, जब भी कभी बॉन्ड बनता है, it is accompanied by lowering of energy, तो सिस्टम will become stable. और जो चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ होता है वो चीज़ें होना पसंद करता है. स्टूडेंट, दैट्स वाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट्स वाई केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, बिकॉज formation of bonds always lower the energy of the system and they can attain stability. Students, stabilities को अगर acquire करना है, so there is a chemical reaction. In chemical reaction, chemical bond is formed, and whenever the chemical bond is formed, energy is released, because minimum energy, maximum stability. So in a chemical reaction, students, chemical bond is formed, and the atoms of the various element involved in the formation of the chemical bond, they also attain its stability by completing its octet and duplet rule, which I already explained in my previous video. Because student, जब भी कभी bond बनता है, जितने भी atoms of the different element involved होते हैं, they can attain its stability by completing its octet. Means all the atoms of the element, they have 8 electrons in the valence shell, either by losing or gaining electrons. So we have a various type of chemical bond. One is ionic bond, one is covalent bond, and one is coordinate bond. And student, you know what is ionic bond? Ionic bond is a bond which is always formed between metals and non-metals, because the bond which is formed by the complete transfer of electrons from one atom to another atom, that is called as the ionic bond. Students, metal are always losing electrons and non-metals are always gaining electrons, which I already explained. So metals electron lose करता है, because by losing electrons, metal will become positive ions, and non-metals always gain electrons. By gaining electrons, non-metal will become negative ions. So students, metal by losing electrons, it will acquire its stability by completing its octet, and non-metals by gaining electrons, it will acquire the stability by completing its octet. So बेटा, metal electron को lose करता है और वही electrons non-metal gain करता है, और they will become both having positive part and negative parts. And student, positive and negative ions are always attract each other by the strong electrostatic forces of attraction. So इनमें एक bond बनता है student, और that bond is called ionic bond, because
Student, metal always loses electrons and non-metal always gain electrons. Metals cations बनाते हैं, वो cations क्यों बनाते हैं? By losing electrons वो अपनी octet को complete करते हैं. और नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो अनायंस बनाते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं. और स्टूडेंट्स, मेटल्स इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वही नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. तो इट इज लाइक अ फ्रेंडशिप ना, एक ने दिया और दूसरे ने लिया. सो दीज cations एंड anions they are bonded together by the strong electrostatic forces of attractions because opposite charges always attract each other. एंड यू नो स्टूडेंट्स, बॉन्ड फॉर्मेशन एक ऐसा वे आउट है जहाँ पर मेटल्स अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है और नॉन मेटल भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है और दे कैन बॉन्ड इट टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इन दिस वे उनका उस सिस्टम का एनर्जी लोअर होता है और स्टेबिलिटी मोर होता है. So another name of the ionic bond, it is also called as the electrovalent bond because वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करके बॉन्ड बनाते हैं. बेटा जो भी मेटल नॉन मेटल में बॉन्ड होगा वो एक आयनिक बॉन्ड होगा, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड. So it is always an ionic bond because ionic bond is always formed by the transfer of electrons. एक ने दिया और दूसरे ने लिया. एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी एक्वायर करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी एक्वायर करता है. सो दैट्स वाई द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नेचर. और मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी भी लूज होता है सिस्टम का, और मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी. नाउ माय नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन इज कोवलेंट बॉन्ड. बेटा कोवलेंट बॉन्ड उस टाइप का दोस्ती है जो दो नॉन मेटल्स में होता है, बिकॉज नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स. मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ नॉन मेटल्स वो छोटे बच्चे हैं जो दोनों ही बच्चे कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स, वी आर नॉट गोइंग टू गिव आवर टॉयज. तो बेटा नॉन मेटल्स ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ द क्वेश्चन, हाउ दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ये नॉन मेटल्स अपनी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं? दैट इज बाय द शेयरिंग. बेटा जब आपके घर में दो छोटे बच्चे होते हैं, वो लड़ते हैं टॉयज के लिए, दोनों बोलते हैं हम नहीं देंगे अपना टॉयज, तो मम्मी क्या बोलती है? दैट यू हैव टू डू द शेयरिंग. तो लाइक वाइज नॉन मेटल्स वो दो किड्स हैं जो देना नहीं जानते, जो लेना जानते हैं. तो उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें जो फ्रेंडशिप होती है, इट इज ऑलवेज like sharing. Sharing is always caring. So the bond which is formed between two non-metals by mutual sharing of electrons between two non-metals, that is a covalent bond. Or students, you know, by the sharing of these electrons, both the non-metals, they can complete their octet and duplet and they can lower their energy. So for example, F2 molecule, fluorine is a non-metal. So one fluorine atom, they can combine with the another fluorine atom by a single कोवलेंट बॉन्ड. बिकॉज स्टूडेंट्स मैंने बोला है ना, शेयरिंग इज केयरिंग. अगर एक फ्लोरीन एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन्स देता है, दूसरे को भी एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना होगा. सो बोथ इफ दे आर गिविंग वन वन इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. बेटा शेयरिंग करने के लिए हमें मिनिमम एक एक इलेक्ट्रॉन्स तो देना होगा. सो दे आर लूजिंग, बोथ आर लूजिंग, गिविंग one electrons each by both these atoms and they will form a single covalent bond is formed in the fluorine molecules, because single line means the contribution by both these atom by one electrons. तो single lines का मतलब होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड बनाता है. Likewise in O2 molecules, these two oxygen atoms, each of the oxygen atom in O2 molecule, they can contribute टू इलेक्ट्रॉन्स. ये भी टू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये भी टू. सो दे हैव अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम, मीन्स टू पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल मेक अ डबल बॉन्ड इन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. लाइकवाइज इन N2 मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, बेटा ये टू नाइट्रोजन एटम कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं? ईच नाइट्रोजन एटम कॉन्ट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दिस नाइट्रोजन एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दिस नाइट्रोजन. तो मीन्स दे हैव अ triple bond present in the nitrogen molecules. And you know student, covalent bond 3 types का होता है: single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond, which I already explained. If the sharing of one electron pair, single. If the sharing of the 2 electron pair, double, like in O2, and the sharing of 3 electron pair, then it has a triple covalent bond like in nitrogen molecule. And student, you know what is coordinate bond? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक ऐसी दोस्ती होती है इन विच
only one atom donate both the electrons and both share the electrons pair equally. स्टूडेंट्स हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसा बोलते हैं, इट इज़ लाइक अ बर्थडे पार्टी. जैसे बर्थडे में आप क्या करते हो, एक ही पैसा पे करता है बेटा, बट जो भी दोनों फ्रेंड्स होते हैं वो इक्वली enjoy करते हैं. Likewise in ammonia is rich in electrons, it has 2 electrons, so it is giving both the electrons and both share. So ammonia is giving, because minimum one electron pair will make a bond, so ammonia donate both the electrons and both share. So that is called as the coordinate bond, and another name of the coordinate bond is called as the dative bond. So students, in conclusion I want to say why the chemical bond is formed. Chemical bond is the way to lower the energy of the system, because minimum energy and maximum stability. And the atoms involved in the chemical bond, they also acquire their stability by completing its octet and duplet. And in ionic bond, there is always a bond formed between metal and non-metals by the transfer of electrons from metal to non-metals. And in covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between two non-metals, and non-metals always make a covalent bond. Students, if you like my video, please subscribe my channel for more science videos, science classes at the rate Dr. Sona Rajpal 123. Thank you.